one thing, CA inter study is not about studying 12 hours in a day. It's about study right things in right order. Many students think that CA inter group 2 के लिए 30 days बहुत कम है. But trust me students, this 30 days is more than enough if you have right strategy. Dear students, clearing CA inter is actually not based on talent. It is based on consistency. So I can assure you, if you follow this 30 days plan in a disciplined manner, then you will find a massive improvement in speed, accuracy, and confidence. So let's get started. I'm going to give you this 30 days plan where you have to follow one major thing, that is consistency. आपको consistent रहना है. ये 30 days को I have broken into 3 cycles. सबसे पहले 15 days, then 9 days, and then 6 days. So 15 days and 9 days is a sort of type of revision, and last 6 days is very important, जो आपको पूरा polishing में लेके जाएगा, and then you will become a quite confident. So let's start with the cycle 1, 15 days. आपको क्या करना है, आपके तीनों सब्जेक्ट को, cost, audit, FM, SM, right? 3 subjects you have. So 15 days should be broken down into 3 parts. That is 5 days, 5 days, 5, 5, 5, 5. So each and every subject you have to give a time of 5 days. Cost, full-fledged आप cost को 5 days दो. Then second cycle will start with the 5 days of audit. Third, you will start with the 5 days of FMS. Now let's talk about how you will be going to complete your cost or audit any subject in just 5 days. आपको क्या करना है, 5 days में आपके chapters को divide करना है properly कि आप कौन से tough, medium या easy level के chapters को combination बनाओ, उसको properly target के हिसाब से set करो कि 5 days में कैसे complete होगा. So आप बस एक बार set करने के बाद you need to follow. The point here is why I'm telling you to complete one subject at a stretch, at a time. Why? Because आप जब एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हो तो आपको हर एक चैप्टर्स के बीच में कनेक्शंस मिलता है. सेकेंडली, आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स का एक ऑप्शन रहता है, हार्ड एंड इजी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वेरी हार्ड, देन आपको ऐसा लगता है कि ओके, आई कैन क्लब कॉस्ट शीट इनटू दैट. गॉट इट? तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे आप 5 days में बना सकते हो और अपने सब्जेक्ट को thoroughly complete कर सकते हो. Next comes your 9 days. How you will be working on next cycle, that is of 9 days. So 9 days, now here 3 subjects will be divided into these 9 days. 3, 3 and 3. 3 days for cost, 3 days for your audit, and 3 days for your last subject, that is FMS. अब आपने जो 5 days में कंप्लीट किया था, अब आपको सेम चीज 3 days में रिपीट करना. इट इज अ शॉर्ट ऑफ रिविजन टाइप ऑफ थिंग, बट yes, some challenges you are going to face in cycle 1. There may be some chapters which you have not able to complete, वो अभी भी पेंडिंग है, या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि कुछ ही सम पेंडिंग है प्रैक्टिस करने के लिए. तो आप जो साइकिल 1 में छूट गया है वो साइकिल 2 में भी इंक्लूड करके आप अपने रिवीजन टेक्निक यूज कर सकते हो. सो बेसिकली फुल फ्लेजेड 3 days शुड बी गिवन फॉर दोस टॉपिक जो पेंडिंग है, दोस टॉपिक यू फील लाइक थोड़ा वीक चल रहा है, मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है, दोस टॉपिक विच यू आर ऑलरेडी डन एंड यू आर कॉन्फिडेंट, तो आप उसके लिए PYQs, MTPs, RTPs प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो गिव योर 3 days full fledged into particular subject, say cost. Second comes your audit. Audit is a little bit challenging. उसके लिए और strategy हम बना सकते हैं और हम आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप audit पे confidence पा सकते हो. So basically again work on the audit thoroughly because this is the only subject which everybody feel tough, उसको उनको learning के लिए tough लगता है. So
आप 3 days में उसको आप प्रॉपरली डिवाइड करो, कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स बनाओ, एसेज को लर्न करो, 3 दिन में स्ट्रैटेजी बनाया, एंड देन यू कंप्लीट ऑडिट, एंड देन कम्स योर एफएमएसएम. सो एफएमएसएम में भी आई थिंक एसएम में यू नीड मोर रिविजन और एफएम में मोर प्रैक्टिस. देन यू हैव टू डिवाइड ईच डे इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट आपका थर्ड रिविजन परफेक्ट हो. सो अभी हमने क्या किया, 15 days, then 9 days. So most important thing here is that sequence. जो सीक्वेंस आपने साइकिल 1 में रखा, चाहे आपने पहले कॉस्ट, सेकंड ऑडिट, थर्ड एफएमएसएम रखा, या पहले ऑडिट, सेकंड कॉस्ट, थर्ड एफएमएसएम रखा, सेम सीक्वेंस यू नीड टू रिपीट हियर ऑल्सो. अगर वो सीक्वेंस गलत हुआ तो आपको रिविजन में और आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज यू मे फील कि मुझे याद नहीं आ रहा. ओके, तो ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, एंड द सेम सीक्वेंस यू नीड टू फॉलो इन द लास्ट 6 days, विच इज वेरी क्रूशियल डे, जहां पर आपने जो 15 days में वर्क किया, देन 9 days में वर्क किया, फाइनल रिजल्ट का डे. सो हियर अगेन दिस 6 days यू नीड टू डिवाइड इनटू 2 2 2. सो 2 दिन आपको कॉस्ट करना है, 2 दिन आपको ऑडिट करना है, 2 दिन अगेन आपको एफएमएसएम करना है. बट what you need to do over here, clearly listen this, because you need not to revise each and every chapters over the third cycle. Here you need to practice a lot of mock writing. ठीक है, तो आप ट्राई करो. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन कॉस्ट, देन आप उसको टू डेज में 4 मॉक लिख सकते हो, 3 मॉक लिख सकते हो. मेरे हिसाब से कॉस्ट ऐसी सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक्स लिखोगे, जितना एनालिसिस करोगे अपने सब्जेक्ट चैप्टर्स को, वो आपको मार्क्स देगा. सो आई विल प्रेफर दैट आप एटलीस्ट 5 मॉक तो लिखो. ओके, देन वंस यू आर डन विथ दिस 2 days, नेक्स्ट फेज विल स्टार्ट ऑफ ऑडिट. ऑडिट में आपको बहुत ध्यान से अपने प्लान करना, बिकॉज इसमें जितने क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितने ऐसे को बार बार रिवाइज करोगे, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा. तो स्ट्रैटेजी यू नीड टू प्लान फॉर ऑडिट, एंड आई विल प्रेफर कि आप इसमें भी मिनिमम 4 मॉक लिखो. लाइक डे 1 में मॉर्निंग में 3 घंटा लिखा, शाम को 3 घंटा लिखा, बीच के समय पे आप कुछ चीजें रिवाइज कर रहे हो, मतलब रेस्ट ऑफ द टाइम. सेकेंड डे में भी आप मॉर्निंग एंड इवनिंग ले लो, तो 4 मॉक तो आप आराम से लिख लोगे, बट आपका माइंडसेट होना चाहिए. थर्ड फेज इज ऑफ एफएमएसएम. इसमें भी आप मोर ऑफ एफएम के मॉक, एसएम के मॉक, दोनों को अलग भी कर सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो. जितना आप लिखोगे, एफएम बिकम मोर स्ट्रॉन्ग. एसएम in the rest of the period, try to revise your SM chapters also. So this 15, 9 and 6, ये 3 साइकिल आप रन कर सकते हो a little bit faster way, and 100% if you follow this plan properly without procrastination, मैं बताती हूँ, आप 100% एग्जाम रूम तक कॉन्फिडेंटली जाओगे, एंड आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे. तो ये 30 days प्लान आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर है, एंड आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने प्लान्स बनाओ, आप उसके ऊपर सक्सेस पाओ. गॉट इट? So students, if you really like this video, then do subscribe me for such related CA strategy video. And if you feel like आपका कोई फ्रेंड को प्रॉब्लम है एंड उसको 30 दिन कम लग रहा है, तो do share this video with them also. And if you want a customized plan for you yourself, and you want कि मेरे प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझकर आप मेरा प्लान बना के दे दो, तो do comment us. I am ready, and we will definitely going to give you a call and will make your plan. Thank you very much. Bye bye.